Dear students, we have started the topic of measurement of principal parameters of fermentation process, and we under this topic we have discussed part one in previous lecture, and in today's lecture we are going to complete this topic and we are going to see further parameters which must be considered and whose measurement is important for a fermentation process to be carried out with a fruitful result. So let's discuss this topic. References: you can consult Fermentation Microbiology and Biotechnology third edition book by L. Mense. Now we are talking about the monitoring and controlling parts of fermenter, or we are discussing the important parameters which must be controlled and monitored. So this is a summary, you can say, or you can say this is a brief overview of what we are discussing. In the last lecture, we have discussed about temperature, oxygen, pressure, and all these. So here are the parts which are important, which are basically the controlling and monitoring parts and their uses. Like it's PT100 is a thermometer which maintains the temperature, which is a temperature sensor, and a platinum resistance electrode is inside it. Then there's a foam probe which sense the form formation in the inside the fermenter. Then there's a pH electrode which sends pH, oxygen sensor which monitors the dissolved oxygen level, heater pad which directly heats the medium, cold finger after direct heating, used to control the vessel content, cool down the vessel content, the closed pipe and coil to pass cool water, then rotameter which responds to speed, and the flow meter, airflow into the vessel, and is attached to an air sparger. Then the pressure valve, which attached to a rotameter for safer operation. Then there are air pumps. Then there are peristaltic pumps, and the function of all these to supply air and the medium, the base, acid, and antifoam. So in today's lecture, we discuss about agitation. Agitation, which is one of the important parameter in fermentation process, because whatever you are growing in fermenter, that material needs to be mixed because there are different phases inside the medium. There are solid part, there are liquid, there are gases. So for the proper mixing of solid, liquid, and gas, and these phases, the agitation and mixing is necessary. The liquid phase contains the dissolved nutrients and metabolites, and the gaseous phase contains the air, carbon dioxide, oxygen, and the solid phase, obviously, the cell and the non-soluble substrate. So mixing is important to ensure the uniform condition of the nutrient availability, constant temperature, and equal distribution of gases throughout the fermentation medium. And if the fermentation process is of aerobic in nature, then the importance mm, uh, is much more higher. The importance of agitation is even more necessary. So why the necessary? Because microbes obviously, when there's micro aerobic fermentation, the microbe needs oxygen, and the oxygen, which is a gas, how it comes into the liquid medium or liquid phase with the mixing. So microbes take up oxygen only from the liquid phase. Agitation enhances rate of transfer of gases into liquid when the material is agitating or mixing properly. Only then the gases can maintain an equilibrium, try to maintain an equilibrium, and try to reach to the membranes, microbes. Then agitation prolongs the retention of air bubbles in suspension. Obviously, when there's in gaseous phase, that gaseous phase is in the form of air bubbles. So agitation keeps the air bubbles in suspension for a longer period of time, and as well as it reduces the bubble size to increase the surface area for oxygen transfer. We know that as the size of the molecule bubble gets smaller, it increases more in surface area, and the bubble provide bubbles to coalesce. The different bubbles, they attach with each other and make a larger bubble. Or if they don't make a larger bubble, then there's you can say attachment of bubbles with each other in order to
provide oxygen to increase the rate of transfer of gases. Then it decreases the thickness of the foam made up of cell and the denatured protein at the glass liquid interface. In order to reduce the forming which is unavoidable part of this fermentation process, that forming get decreased due to agitation. So agitation can be provided by mechanical movement of the stirrer shaft or passing through high pressure air through fermenter. Agitation can be provided with any mean on the basis of the different types of fermenter. We have discussed the different types of fermenter where agitation is necessary, where agitation is provided by bubbles, where agitation is provided by air, where agitation may be provided by some stirrer shaft. So how this agitation measure and control? Who is controlling this agitation? So agitation speed can be measured by power consumed by agitator shaft. Actually, the agitation is provided by the agitator shaft, and that agitator shaft is attached with a motor, and the motor is consuming power. So we indirectly measure agitation through the power consumption of the agitator shaft. So watt meter is usually used in large scale processes. It is a measure of power consumed for rotation or of agitator shaft. So as the agitator shaft rotate, power will consume, and that power, the consumption of the power is measured by a watt meter, and it tells how much power this process has consumed. This measure is less accurate because power required to rotate against friction is in the bearing is taken into consideration. When you take that consumption of power, it is less accurate because the friction which the motor is encountering, to overcome that friction, more power is utilized. So the you can say the measurement gives you extra power which is consumed by agitated shaft, as well as to overcome the resistance inside the motor bearing. There's another instrument which can be used for controlling the agitation is the torsion dynamometer. It is used in small scale. It has to be placed outside the vessel and less accurate due to friction. Here again, there's a friction, and due to friction, it is less accurate. Then there are strain gauges which can be mounted on shaft within the fermenter, from which electronic signal is picked up through lead wire passing out of fermenter via an axial hole. So there's another you can say available device are the strain gauges, which are mounted on inside the fermenter on the shaft, and the electrical signals are coming out from this and displayed on the digital meter. So technometer can be used to control the agitation speed. The rate of rotation is monitored either by electromagnetic induction or voltage generation or light sensing or magnetic force through any physical this physico-chemical, or you can say the electromagnetic conversion of energy. These technometers can detect any kind of change um, due to the speed of agitator shaft. So the final choice is made by the type of signal required to record or monitor the signal. So the ultimate choice that whether what type of technometer you are going to use, whether it is based on electromagnetic induction, whether it's based on voltage generation, then based on light sensing or magnetic force. This final choice depends on the requirement or the monitoring of the signals. The agitator shaft speed is also controlled by gearbox usage, modifying the size of wheel and drive belt, and changing the drive motor. So speed can also be controlled by changing all of these physical parts of the devices. So technometer is an electronic device usually integrated into a drive motor to provide feedback about rotational speed in the form of an analog signal. So here you can see this is the drive shaft with Ruston impeller, and there's a motor which is driving this impeller and the shaft, and the motor is giving the feedback from technometer control signals to monitor, and there's a display showing the
uh, revolutions per minute. So a DC low voltage 24 to 50 volt motor is often used for safety reasons. Speed range is typically from 50 to 150 RPM for bacterial system and 10 to 300 RPM for cell culture units. So it is now possible to use universal motors that can cover the complete range of speeds for microbial and cell culture application for bench scale bioreactors. Okay, so as the motor derive the shaft and the technometer which is attached on the agitator shaft, it conduct only the power which is consumed by the shaft, and through the wires the electronic signals transfer to the digital meter where it is written that the shaft is rotating on that speed with that rotation per minute, or with the consumption of this amount particular amount of power. So in this manner one can control the agitation and movement of agitator speed. Next is pH measuring and controlling device. pH is very important for any kind of living system, living, you can say bioconversion or biotransformation. So hydrogen ion concentration is controlled by the addition of acid or alkali as, as the conditions change with growth. So as the microbial cell or cell culture they grow, their pH changes, but in order to maintain the working capacity of the living system, the pH must be maintained. So the controller uses a pH electrode to sense these pH changes and provide a feedback signal. So there are electrodes mounted in a fermenter, and the pH electrode which measure the pH of the fermentation media, and culture, and then gives the signal, and in response to the signal, the supply of acid or alkali started activates, and it brings the pH back to the set point. So pH meter is calibrated before the electrode is autoclaved. So before autoclaving, pH meter is calibrated. The steam sterilizable electrodes have a limited life cycle, means they can be used up to 20 to 50 sterilization cycles. After then, you need to replace the steam sterilizable electrodes, and there are pumps which supply the acid and alkali are normally built into the instrumentation or base unit housing. सो ये जो सारा सेटअप है एक फर्मेंटर का, वो जब डिज़ाइन हो रहा है तो यहाँ पर ट्यूबिंग्स अटैच हैं, और जो कि बॉटल्स बाहर बॉटल से अटैच हैं, और ये कंप्यूटर आप कह सकते हैं कि इट्स अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम, जिसके अंदर जब पीएच ड्रॉप होगी तो वो जिस तरह एक आप कहते हैं वो सेंसर होता है ना, कि जो थ्रेश होल्ड से जब वैल्यू नीचे जाएगी तो वो सेंसर जो है वो सेंस करके एसिड या अल्कली जिसके भी हिसाब से वैल्यू ऊपर नीचे, वैल्यू अगर अल्कलाइन साइड पे गई है तो ऑब्वियसली एसिड ऐड होगा, अगर एसिड साइड पे चली गई है पीएच तो बेस ऐड होगी, तो वो इस रिस्पॉन्स में जो है एसिड और बेस रिलीज होते हैं. So the reagent bottle are connected to the bioreactor via silicon tubing, and the bore size of which determine the volume of acid or base that can be added when the pumps are turned on. So जब electronically एक set value से नीचे या ऊपर जाएगी pH, तो जो पंप्स हैं वो ऑन हो जाएंगे, और वो पंप्स जो हैं वो जो कि जिनका बोर साइज जो है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ एसिड. ऑब्वियसली अगर आप एक लार्ज फर्मेंटर्स की बात करें तो वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एसिड और बेस जो है वो जो आपकी लैब स्केल फर्मेंटर है उससे तो ज़्यादा ही होगा ना, तो वो इस पे डिपेंड करती है आपकी सिलिकॉन ट्यूबिंग का बोर साइज कितना होगा, और ये ऑटोमेटिक कनेक्टेड होती है रिएजेंट बॉटल के साथ. तो पंप्स जैसे ही ऑन होते हैं तो एसिड या अल्कली जोन सी भी चीज़ जानी है सेट पॉइंट से जिसकी वैल्यू डेविएट की है, तो वो बॉटल अकॉर्डिंगली फिर ट्रांसफर करती है अपना कॉन्टेंट. So selecting the concentration of the alkali and acid will determine how much effect each dose has on the vessel content.
कंटेंट। सो आप एसिड और अल्कली की कंसंट्रेशन सिलेक्ट करके आप ये नोट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इफेक्ट वेसल के कंटेंट के ऊपर ये अल्कली या एसिड डालेगा। Normally, the concentration of acid and alkali are in the range of 0.5 to 2 molar. मतलब ये जो bottles attach है जिनके अंदर acid या base है वो क्या है, उनकी concentration 0.5 से 2 molar तक के बीच में होती है। मतलब 1 मोल का आपका एसिड हो या बेस। अब ये देखें, ये सारा का सारा सिस्टम देखें जरा। ये आप पीएच इलेक्ट्रोड है जो कि क्या होती है, जो कि अपनी ये जो वेल्व बना हुआ है इसके थ्रू इसके अंदर भी आप डाल सकते हैं और एट टाइम्स डाल सकते हैं जब आपने पीएच मेजर करनी है। ठीक है, मतलब ये इंसर्ट हो जाएगा इसके अंदर। उसके अलावा 3 वे इनलेट है जो कि इसके अंदर इंसर्ट होगा और वो रिस्पॉन्स करेगा कि उसने क्या क्या सोल्यूशन के अंदर ऐड करना है। ये पीएच इलेक्ट्रोड देखें, ये इस मशीन से अटैच है जिसके ऊपर डिजिटल मीटर लगा है और वो पीएच शो कर रहा है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं PT100 टेम्परेचर सेंसर भी लगा हुआ है, उसका भी कनेक्शन है। ठीक है, अभी देखिए टेम्परेचर प्रूफ जो है फर्मेंटर के अंदर है, लेकिन पीएच प्रूफ फर्मेंटर से बाहर नजर आ रही है, जस्ट टू शो यू के किस तरह से होता है। ये एसपी क्या है, एसपी इज द सेट वैल्यू जो भी आपने सेट की हुई है, थ्रेश एक रेंज जो आपने दी है ना वो। तो अबव एसपी से होगा, अगर सेट पॉइंट से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी तो जो है आपका सिस्टम के अंदर एसिड ऐड होगा। ठीक है, और अगर आपका बिलो सेट पॉइंट होगा तो बेस ऐड होगी। ठीक हो गया। सो डिप ट्यूब रिएजेंट बॉटल ऑफ 1 molar HCl and the other bottle is of sodium hydroxide, which is an alkali. And there are peristaltic tubing. Peristaltic pumps are involved in the transfer of this solution to the media. So the care should be taken. So the use of ammonium salt as an alkali has the added advantage of adding extra nitrogen for the growing culture. अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह अमोनियम सॉल्ट यूज करेंगे एज एन अल्कली, तो वो आपके मीडिया के अंदर एज अ एक्स्ट्रा नाइट्रोजन सोर्स के तौर पे भी बिहेव करेगा। So care should be taken when using ammonia water because ammonia can become gaseous in the tubing. So इसके hazards भी साथ साथ आपने नोट करने होते हैं। A set point value as well as an upper and lower limit is fed into the controller to provide a dead band range in which controller is inactive. So आपने set value दी है, so set value में आपने minimum और maximum दे दिया है और उस दौरान और मिनिमम मैक्सिमम आपने कंट्रोलर सिस्टम को प्रोवाइड कर दिया है, तो वो एक डेड बैंड बन गया। मतलब एक ऐसा रेंज आपने दी है कंट्रोलर को जिस दौरान कंट्रोलर जो है वो इनएक्टिव रहेगा। ऑब्वियसली अगर पीएच कंट्रोल में रहेगी सेट वैल्यू के बीच में तो आपका कंट्रोलर तो इनएक्टिव रहेगा ना। So this band is normally the desired value. A proportional band adjustment may be present to widen or tighten the range of pH value over which controller acts. तो आप इसके अंदर एडजस्ट मतलब वैल्यूज को रिलैक्स भी कर सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं ताकि कंट्रोलर सिस्टम जो है वो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर सके। सो इस तरीके से पीएच मॉनिटर होती है। Next is the foam sensing. The appearance of foam is an unavoidable and undesirable phenomena because in the course of fermentation process, as the microbial system grow or microbial cells grow and other animal and plant cells grow, and there is agitation, the foaming is must to generate. And the appearance of the foaming it poses risk for the fermentation broth for the contamination. So during the forming, it is not possible to perform high quality analysis and measurements. So elimination is required. Elimination of foam can be done by two methods or by the combination of any two of it. And what are the two methods? That additional metering of antifoam. So you are going to monitor the antifoam content um, which is based on the foam sensor. Obviously, when there is anti-foam present transferred into the media, then the foams of the production of foaming get reduced, and the reduction is also detected by the sensor. Another is mechanical metering of the foam that you actually up set up another you can say form determination operators on the top plate of the fermenter
So the formation of foam is detected by a conductance type probe that is fitted in the vessel head space. जिस तरह अभी अपने पीएच में देखा था ना कि पीएच रॉड जो है वो हेड स्पेस के थ्रू जा रहा था, इसी तरीके से फॉर्म सेंसर जो है वो भी कॉम्पिटेंस टाइप प्रोब के तौर पे हेड स्पेस से जाएगा. वंस फॉर्म इज डिटेक्टेड द प्रोब गिव द कंट्रोलर सिग्नल टू डिस्पेंस अ डोज ऑफ एंटीफॉर्म. जैसे ही फॉर्म डिटेक्ट हुई है तो कंट्रोलर वो जो आपकी आप कह लें कंप्यूटराइज्ड मशीन है जिसके अंदर आपने पूरा इनपुट दिया हुआ है हर चीज का, वो फौरन डिटेक्ट करेगी कि एंटीफॉर्म की रिक्वायरमेंट है अब. So the sensitivity of form detection should be adjusted to suit the condition prevailing in the bioreactor. तो अब आपने फॉर्म की डिटेक्शन की वैल्यूज भी सेट करनी है अपने कंट्रोलर सिस्टम के अंदर, और ये भी साथ में ध्यान रखना है कि किसी भी मतलब कोई भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं ना, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेट कंडीशंस, मतलब उसकी बिहाइंड बायोकेमिस्ट्री और वो सब कुछ आपने चेक रख आपको उसका नॉलेज होना चाहिए ताकि आप इस फॉर्म सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकें. उसके अलावा ये जो प्रोब है उसके उसके अंदर जो मटेरियल है वो इनर्ट मटेरियल होता है, जिसकी वजह से स्प्लैशेस या आप कह लें फॉल्स पॉजिटिव जो है ना वो इंफॉर्मेशन नहीं जाती. मतलब प्रोब के अंदर इनर्ट मटेरियल लगा है जो कि थोड़ी बहुत जो फॉर्मिंग हो रही है उसके रिस्पॉन्स में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता, उससे मतलब इट प्रिवेंट्स. So normally the metal top plate is used to provide the electrical circuit for the probe to operate. So a flying lead is provided that fits into the socket somewhere on the top plate. आप ये देख सकते हैं कि टॉप प्लेट के ऊपर फॉर्म प्रोब लगा हुआ है. ठीक है जी. Antiform reagent can be mineral oil, vegetable oil, or certain alcohols. Even commercial preparations are also available for use in pharmaceutical fermentation. So the key thing with using oil is that they can form a skin on the surface of the culture and interface with gas transfer at the liquid air interface. Means when you add oil as an anti forming agent तो आपको पता है ना ऑयल की वजह से एक सरफेस के ऊपर एक स्किन डेवलप हो जाती है, जिस तरह बिल्कुल कोई गर्म चीज होती है तो या ऑयल की लेयर जिस तरह एक ऊपर आ जाती है, एंड दैट ऑयली लेयर विल अल्टीमेटली इंटरफेयर विद द गैस ट्रांसफर at the liquid air interface. If form is allowed to build up unchecked, अगर आप चेक ना करें फॉर्म को तो क्या होगा, तो ये होगा कि इवेंचुअली वो फॉर्म बढ़ते बढ़ते एग्जिट गैस फिल्टर तक पहुंच जाएगी और उसके अंदर क्रॉस कर देगी, उसको ब्लॉक कर देगी और कंटेमिनेशन का एक रास्ता बन जाएगा. ठीक है. अब ये देखें कि ये फॉर्म प्रोब है, इससे जो भी रीडिंग्स जो हैं वो सिग्नल्स जो हैं वो कंडक्टिविटी के थ्रू जा रहे हैं किसके अंदर, कंट्रोलर सिस्टम के अंदर. वहां पर डिस्प्ले के मॉनिटर के ऊपर नजर आ रहा है कि कितनी फॉर्मिंग क्या वैल्यूज आ रही हैं. एंड इन रिस्पॉन्स टू द फॉर्मिंग एंटी फॉर्म जो सिस्टम अटैच है वो रिएजेंट बॉटल के साथ अटैच है जिसके अंदर लीक ऑयल हो सकता है, कोई और प्रिपरेशन हो सकती है एंटीफॉर्म की. वो थ्रू पेरिस्टाल्टिक ट्यूबिंग जो है वो इस थ्री वे इनलेट के थ्रू, थ्री वे इनलेट इसमें एक इनलेट जो है वो पीएच कंट्रोलिंग के लिए है, एक जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए है और एक इसके लिए है एंटीफॉर्म के लिए. नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन. डिजोल्व ऑक्सीजन हमने ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट की बात की थी मास ट्रांसफर में, लेकिन डिजोल्व ऑक्सीजन इज अनदर पैरामीटर कि जब आप एयर या कोई भी जो है ऑब्वियसली गैसेस पास कर रहे हैं, तो वो गैसेस हो या एयर हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो ऑक्सीजन हो, वो सम हाउ लिक्विड में डिजोल्व करती हैं. तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो है उसकी क्वांटिटी पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसने अल्टीमेटली आपके माइक्रोबियल ग्रोथ को इफेक्ट करना है या जो सेल ग्रोथ है उसको इफेक्ट करना है. सो डिजोल्व ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पैरामीटर टू कंट्रोल एंड द इलेक्ट्रोड यूज्ड टू मेजर डिजोल्व ऑक्सीजन आर नाउ ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ द पोलैरोग्राफिक टाइप. पोलैरोग्राफिक मीन्स जो पोलैरिटी पे बेस्ड होते हैं. They respond rapidly, robustly, and accurately to change in the oxygen concentration. So the electrodes are polarographic in nature,
And the key point with this type of electrode is that it requires a voltage to polarize the anode and cathode of the detecting cell. तो जो basically voltage है वो anode और cathode को polarize करती है, जिसकी रिस्पॉन्स में फिर इलेक्ट्रोड जो है वो सेंस करता है dissolved oxygen को. And this polarization take 2 and 6 hours to complete. During this time, the electrode must be connected to its relevant module, which must be turned on. To set the electrode to zero after autoclaving, first pass oxygen-free nitrogen through the culture vessel for a few minutes, and once all oxygen is expelled, set the zero point. तो आपने जो कंट्रोल ये जो आपका इलेक्ट्रोड है डिजोल्व ऑक्सीजन को सेंस करने के लिए उसको यूज करते वक्त ऑटोक्लेव करने के बाद आपने फर्मेंटर के अंदर से ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन पास करनी है, ताकि जितनी भी ऑक्सीजन ऑटोक्लेव के दौरान फर्मेंटर के अंदर इकट्ठी होगी वो सारी ऑक्सीजन रिलीज हो जाए. जब वंस ऑल द ऑक्सीजन गेट एक्सपेल्ड तो आप 0 पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि इसके बाद जो ऑक्सीजन अंदर सेंस हो फर्मेंटर के वो कौन सी ऑक्सीजन होगी, वो डिजोल्व ऑक्सीजन होगी. ठीक है. So control of dissolved oxygen can simply be achieved through influencing speed control, adjusting airflow and the combination of both. मतलब अगर आप स्पीड को कंट्रोल करते हैं तब भी ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन कंट्रोल हो सकती है. एयर फ्लो को देखिए स्पीड ने किस तरह करना है. स्पीड मीन्स एजिटेशन, एजिटेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ लिक्विड गैस एंड सॉलिड फेज. उसके अलावा एयर फ्लो, एयर फ्लो क्या है, स्पार्जर के थ्रू एयर ने अंदर आना है, एयर बबल बनना है, तो वो भी कंट्रोल्ड है. तो ये दोनों चीजें कंट्रोल करने से आप डिजॉल्व ऑक्सीजन को कंट्रोल कर सकते हैं. इंक्रीजिंग द speed of mixture and airflow may increase forming to a level that become problematic. लेकिन अगर आप इसी चक्कर में स्पीड ज़्यादा बढ़ा देंगे और एयर फ्लो बढ़ा देंगे तो आपका फॉर्मिंग का इफेक्ट भी साथ साथ बनेगा, जो कि फिर प्रॉब्लमेटिक होगा. सो द मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म ऑफ फ्लो कंट्रोल इज यूज अ थर्मल मास फ्लो कंट्रोल वेल्व, मतलब टेम्परेचर एसोसिएटेड मास फ्लो control valve use करना है, which measure and control airflow on the basis of cooling effect the gas exert when passed over a heated element. तो आपने क्या करना है, थर्मल मास फ्लो कंट्रोल वेल्व जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्या होगा, आप एयर फ्लो को कंट्रोल करेंगे और वो एयर फ्लो किस पे डिपेंड करती है, वो एयर फ्लो डिपेंड करती है कि हीटिंग एलिमेंट को किस तरीके से कूल किया गया है और उसके रिस्पॉन्स में ऑक्सीजन की क्या कंसेंट्रेशन है. Largest steel bioreactors में pressure control is also used to increase the amount of dissolved oxygen. जो बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स हैं उनमें आप प्रेशर के थ्रू डिजॉल्व ऑक्सीजन को कंट्रोल कर सकते हैं. Next parameter is the weight. This parameter is used for continuous or fed batch cultures in which the rate of addition of feed must be known and controlled very accurately. मतलब पूरे के पूरे फर्मेंटर का आपने वेट लेना है. ठीक है. इसके लिए एक होल आप एक पूरे बायोरिएक्टर का वेट ले लें और उसको फिर टीयर आउट कर दें उसके वेट को, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लैब में एनालिटिकल बैलेंस यूज करते हैं कि आप पहले फिल्टर पेपर रखते हैं या जो भी आपका पेपर है उसको रखते हैं, उसके मैथ को टीयर कर देते हैं. उसके बाद जितना भी वेट आपकी मशीन डिटेक्ट करती है वो किसका होता है, वो उस सॉल्ट का या उस केमिकल का वेट होता है जो आप पोर इन करते हैं. बिल्कुल वैसे ही मेथड से आप वेट को मेजर कर सकते हैं. So the deformation of load cell provide an output signal which then transduced and in turn transmitted to the controller module in the form of electronic signal. तो लोड सेल क्या करता है, आउटपुट सिग्नल को भेजता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की फॉर्म में कंट्रोलर मॉड्यूल के ऊपर. So control is normally by setting a maximum or minimum weight in a manner that is analogous to speed pump control. तो इसमें भी आपने मिनिमम और मैक्सिमम वेट जो है वो ऐड करना है, उसके थ्रू कंट्रोल आएगा. उसके अलावा वेरिएशन है सिस्टम की जो कि और एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं वेट को, कि आप अमाउंट ऑफ अल्कली और एनी रिएजेंट उसको कंसिडर कर लें. मतलब कितना रिएजेंट आप बायोरिएक्टर में डाल रहे हैं, अगर आप उसको सही मेजर कर लेंगे तो आप वेट को मॉनिटर कर सकते हैं. इन दिस केस द रिएजेंट बॉटल इज प्लेस्ड ऑन एन एनालिटिकल बैलेंस which has a computer output and a decrease in weight is used as a measure of the amount of reagent added. मतलब क्या है कि आपकी जो कोई भी रिएजेंट है उसकी अमाउंट के थ्रू आप वेट निकाल लें. मतलब जितना रिएजेंट के अंदर की बॉटल में वेट कम होता चला जाएगा, इसका मतलब क्या है, उतना ही वेट उतना ही जो अमाउंट इंक्रीज हो रही है वेट में वो
फर्मेंटर की अमाउंट इंक्रीज के अंदर जो कंटेंट है उसकी अमाउंट इंक्रीज हो रही है। फॉलो करें इस बात को, मतलब ये कि रिएजेंट बॉटल के अंदर कमी आएगी, आप रिएजेंट बॉटल को एनालिटिकल बैलेंस पे रख दें, जो कि एक कंप्यूटर आउटपुट सिस्टम के तौर पे डिस्प्ले करेगी रिजल्ट को, और जितना जितना रिएजेंट बॉटल में कमी आएगी उसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ रिएजेंट जो है वो डाला गया है फर्मेंटर के अंदर, और उतना ही वेट में इंक्रीज भी हम मॉनिटर करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? देखिए ना, अगर आपने एक बैच कल्चर लगाया है, इवन अगर आपने कंटिन्यूस या फेड बैच भी लगाया है कल्चर, तो आपने जो मीडिया डालना है वो कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। अब उस कैलकुलेटेड मीडिया के अंदर आप जितना रिएजेंट और ऐड करेंगे उतना उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल वही बात यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि आपने एक मेजर्ड अमाउंट फर्मेंटर में डाली है, उसके फिर फर्मेंटर स्टार्ट ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद जितने भी रिएजेंट डलेंगे वो सारे रिएजेंट आपने एनालिटिकल बैलेंस टाइप सिस्टम के थ्रू सेंड करने हैं। तो जितना जितना रिएजेंट उसके अंदर जाता जाएगा उतना आप कैलकुलेट कर लेंगे कि फर्मेंटर का इतना वेट बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑनलाइन मेजरमेंट ऑफ बायोमास। अब बायो फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है, बायोमास बन रहा है, माइक्रोबियल सेल बन रहे हैं, या जो भी लिविंग सेल कल्चर यूज कर रहे हैं वो उसकी सेल में इंक्रीज हो रहा है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट जो है वो डिजायरेबल है कि आप डायरेक्टली मेजर करें कि कितना नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर है, कल्चर के अंदर है, ताकि आप फीड रेट को कंट्रोल कर सकें, ऑक्सीजनेशन को कंट्रोल कर सकें, और बाकी जितने भी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस हैं जनरल उनको लुक आफ्टर कर सकें, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपके मीडिया के अंदर अभी सेल ज़्यादा नहीं बने हैं, इसका मतलब मीडिया अवेलेबल है, तो आप मज़ीद फीड नहीं डालेंगे, ठीक है। और अगर माइक्रोव ज़्यादा बन गए हैं और ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो रही, तब भी जो है माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो इफेक्ट होगी। सो मेजरमेंट ऑफ टोटल सेल नंबर, वेट वेट, ड्राई वेट एंड वायबल सेल काउंट, ये सारे के सारे जो हैं ये होते हैं इंटरमीडिएटली सैंपल्स लिए जाते हैं फर्मेंटर के अंदर से थ्रू सिरिंजेस जो कि बाहर लगी लगी हुई होती हैं ट्यूबिंग्स के थ्रू, और फिर उनके ऊपर रेलेवेंट बायो लेबोरेटरी एनालिसिस किया जाता है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी यूज की जाती है टू मेजर द नंबर ऑफ वायबल सेल इंटरनली विद अ प्रोब और एक्सटर्नली थ्रू द वेसल ग्लास विंडो। मतलब जो आपकी वेसल है, फर्मेंटर है, उसके ऊपर एक ग्लास विंडो बनी होती है, उसके थ्रू भी आप जो है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के थ्रू चेक कर सकते हैं कि अंदर बायोमास की क्या सिचुएशन है। सो द प्रोब बेस्ड सिस्टम इज यूजुअली suited to bench scale vessel which is similar in the design of optical density probe। जिस तरह ऑप्टिकल डेंसिटी प्रोब होती है ना कि टर्बिडिटी बढ़ जाती है, जैसे जैसे माइक्रोबियल सिस्टम न्यू मीडिया के अंदर जाता है, आफ्टर सर्टेन टाइम्स उसकी नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से टर्बिडिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो आप टर्बिडिटी अकॉर्डिंगली क्या करें, आप टर्बिडिटी के अकॉर्डिंगली मेजर करेंगे कि जी इस वक्त फर्मेंटर के अंदर बायोमास की क्या वैल्यू है। ऑप्टिकल डेंसिटी या टर्बिडिटी सिस्टम में क्या है जी, आप इंक्रीज इन टर्बिडिटी मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, एंड सब्सिक्वेंट स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द माइक्रोबियल पॉपुलेशन प्रोवाइड अ गुड मीन टू मेजर माइक्रोबियल ग्रोथ। आपने क्या करना है जी कि आपने सैंपल लेने हैं विद सर्टेन टाइम इंटरवल्स पे, और उन सैंपल्स को आपने फिर उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी थ्रू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चेक करनी है, या ओडी सेंसर के थ्रू चेक करनी है जो कि वेसल के साथ ही लगा हुआ हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोवाइड कर रहा होता है फाइब्रो ऑप्टिक केबल के थ्रू। सो यहाँ पर भी सेट पॉइंट कैलिब्रेशन प्रोसीजर है, और रिजल्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट्स। A range up to 200 ग्राम पर लीटर ड्राई वेट इज measurable with good deal of accuracy। तो अगर आपके सोल्यूशन की या आपके फर्मेंटर के अंदर 200 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ड्राई वेट मौजूद है तो ये आपकी अच्छी एक्यूरेसी है। Method is cost effective and work well for cultures in in the logarithmic phase of growth। ये जो टर्बिडिटी चेक करने करके बायोमास की मेजरमेंट है, ये एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है, और ये वो उन कल्चर्स के साथ
अच्छा जाता है, जिनके अंदर लॉगरिथमिक फेज होती है, जैसे माइक्रोबियल कल्चर है, कि विद पैसेज ऑफ टाइम एक प्रॉपर कर्व आएगा, लॉग वाइज इंक्रीज होगा और फिर अल्टीमेटली वो डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा. बट दिस डज मेथड डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइव और डेड सेल. अब हमें नहीं पता कि ये जो लॉगरिथमिक ग्रोथ फेज दे रहा है, ये टर्बिडिटी सिस्टम, इसके अंदर लाइव सेल कितने हैं और डेड सेल कितने हैं. नेक्स्ट मेथड जो बायोमास मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है वो होता है कॉम्पिटेंस और कंडक्टेंस बेस्ड. ये टिपिकली नोवल अप्रोच है जिसके अंदर वाइबल सेल्स, किसी भी किस्म के ऑर्गेनिज्म के वाइबल सेल्स जो है वो काउंट हो सकते हैं. एक प्रोब वेसल के अंदर लगाया होता है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल फील्ड बेस्ड होता है, और वो नेचुरल कैपेसिटेंस ऑफ लिविंग सेल्स उसको जो है मेजर करता है. ठीक है, जिससे क्या होता है कि बिल्डिंग अप अ चार्ज द इंटेंसिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वाइबल सेल. जितने वाइबल सेल मौजूद होंगे उन सबकी अपनी अपनी कॉम्पिटेंस होती है. ठीक है, उस कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंगली वो चार्ज बिल्डअप होता है, और हर सेल का अपना स्पेसिफिक रेंज है इस चार्ज बिल्डअप का. So the signal is processed and or can be expressed as dry weight or concentration in cells per milliliter. तो ये पर मिलीलीटर के हिसाब से बायोमास मॉनिटरिंग होती है. During the course of fermentation, an anti-fouling system is used to maintain the ability of the probe to give accurate reading over long time periods. So एक anti-fouling system अटैच होता है जिससे प्रोब की जो रीडिंग है वो एक्यूरेट और बहुत लंबे अरसे तक वो चला सकते हैं आप probe. So this type of instrument make possible the control of feed pumps by biomass concentration and could form the basis of an automated transfer system for inoculating large vessel. अब ये सारा जो सिस्टम है, ये सारे सिस्टम से हो क्या रहा है कि ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, कि हमने ऐसी सिस्टम, ऐसी इंजीनियरिंग करवाई है जिसके थ्रू ऑटोमेटेड ट्रांसफर सिस्टम हो सकता है. अब प्रोब ने सेंस किया है कि लिविंग सेल्स जो हैं वो अभी ज्यादा तादाद में मौजूद हैं. ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन बताई है. तो उस कंसंट्रेशन के रिस्पॉन्ड में फिर जो आपके फीड पंप्स हैं, जो ये पैरास्टेलेटिक फीड पंप्स हैं, वो मीडिया को की ज्यादा अमाउंट भेजेंगे. लेकिन अगर आपके इस कॉम्पिटेंट सिस्टम ने कहा है कि जी लिविंग सेल्स जो हैं वो तो थोड़े हैं. ठीक है, अब लिविंग सेल्स थोड़े होने का मतलब क्या है कि कौन से सेल ज्यादा हैं, डेड सेल ज्यादा हैं. तो उस वक्त जरूरत है मजीद मीडिया भेजने की कि जब डेड सेल ज्यादा हों. ऑब्वियसली नहीं जरूरत, मतलब जिस वक्त डेड सेल्स लिविंग सिस्टम के ज्यादा हैं उस वक्त उसको और मीडिया की पंप करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अंदर लिविंग माइक्रोब कम है. वो जो मीडिया जाएगा वो और डाइल्यूटेड इफेक्ट कर देगा आपके फर्मेंटर के कंटेंट पे. उसके अलावा जी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो एक you can say that it is a more versatile and it increase the capability of the working of fermenter. आप बहुत सारी गैसेस जो हैं वो आप एनालाइज कर सकते हैं थ्रू मास स्पेक्ट्रोमीटर इन गैशियस एंड डिसॉल्व फॉर्म. Oxygen, carbon dioxide, argon, nitrogen, ammonia, hydrogen, methanol, ethanol, and several other organic volatiles. Even that isotope ratios can also be detected. कि अगर आप कोई एक आइसोटोप सब्सटेंस डालते हैं तो C12 C13 की रेशियो के हिसाब से आप उसको भी मेजर कर सकते हैं. मेथड ऑफ एनालिसिस रैपिड and thus allowing for a multi-inlet system to be used which share the analyzer among several separate vessels within a bank of बायोरिएक्टर. मतलब एक ही बायोरिएक्टर के अंदर आप ये कह सकते हैं कि एनालाइजर जो है वो जब वो एक पर्टिकुलर पैरामीटर को मेजर कर रहा है तो उस वक्त वो एक सेपरेट वेसल को कंसिडर कर रहा है. वेसल एक ही है लेकिन वो उसको उस एक पर्टिकुलर टाइम में जब वो कोई एक एनालाइट मेजर करने लगा है तो वो सारी वेसल के अंदर सिर्फ उस एक एनालाइट को ही रिप्रेजेंट करेगा. ठीक हो गया. सो द फिजिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इज द आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल बाय एन इलेक्ट्रॉन सोर्स. मतलब क्या है कि आपने इस मास स्पेक्ट्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रॉन सोर्स के थ्रू आपने गैस मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन करानी है. ठीक है, जो कि ज्यादातर एक हॉट फिलामेंट के थ्रू होता है. फॉलोइंग बाय द सेपरेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड में उसकी सेपरेशन करनी है. क्वाड्रोपोल एनालाइजर यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ RF and DC इलेक्ट्रिक फील्ड्स according to mass and charge ratio. This separation takes place in a virtual vacuum to minimize collision between before sorting. Magnetic field is tuned so that only the ions of interest will be focused on the detector.
system, a Faraday cup, a metal plate which generate a tiny electrical current whenever a gas ion strike it. This signal can be amplified and displayed by returning the magnetic field very quickly within millisecond. Different ions can be detected and measured sequentially. बात को फॉलो कर रहे हैं आप? इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आपने एक पर्टिकुलर लाइट की मैस स्पेक्ट्रोमेट्री सेलेक्ट की है तो वो आइन वो पर्टिकुलर गैस जो है वो हॉट फिलामेंट की वजह से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? अपने आइंस में। और वो आइंस जो हैं वो फिर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के फौरन बाद ही मैग्नेटिक फील्ड में जब वो टर्न करेंगे तो उनके ऊपर जो सा भी चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंगली वो मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में और जाकर वो एक करंट डेवलप करेंगे या गैस आयन स्ट्राइक करेंगे और फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्विकली वापस भी जाएगी, मतलब खत्म भी होगी। सो डिफरेंट आयंस के लिए डिफरेंट जो है टाइम होगा, मतलब हर आयन जो है वो डिफरेंटली टाइमिंग्स में अपने एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है फ्रॉम इट्स आयन, तो आप उसको सिक्वेंशली मेजर कर सकते हैं। देन कम द सबस्ट्रेट सेंसर्स। सबस्ट्रेट सेंसर मतलब आपने जो सोल्यूशन फर्मेंटेड मीडिया के अंदर जो सबस्ट्रेट डाले हैं उनको भी सेंस करना है। Sensor for the detection of substrate usually depend on chemical and enzymatic reactions within the fermenter vessel or by sensing the release of volatile component in the exit gas. अब या तो आप एंजाइमेटिक वेसल के अंदर जो सबस्ट्रेट हैं उनको केमिकल और एंजाइमेटिक रिएक्शन से चेक कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा उसमें से सोल्यूशन ले सैंपल लेके उसका एंजाइमेटिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, या उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो एग्जिट गैस से वोलेटाइल कंपोनेंट रिलीज हो रहे हैं उनको सेंस कर सकते हैं हम, उनको कलेक्ट करके उसके ऊपर अपना बायोकेमिकल एनालिसिस टेस्ट लगा सकते हैं। ग्लूकोज मेजरमेंट एंड कंट्रोल किस तरह होता है? द मोर सोफिस्टिकेटेड वर्जन इनकॉर्पोरेट अ स्मॉल डायलिसिस यूनिट इन अ स्टेरिलाइजेबल प्रोब टू टेक मिनट quantitates of liquid from the medium for analysis. So एक छोटा सा डायलिसिस यूनिट है इन स्टेरिलाइजेबल प्रोब जो कि टेक अ मिनट माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ liquid from the medium for analysis. ठीक है। Enzymatic reaction linked to a transducer provide a measurable current that can be amplified to give an output signal. अब देखें ग्लूकोज मेजरमेंट के लिए आपको पता है ना कि ग्लूकोज स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं। वो स्ट्रिप्स क्या करती हैं, उनके ऊपर एंजाइम माउंट होता है और वो क्या करते हैं कि स्टेरिलाइजेबल प्रोब के थ्रू एक छोटी सी क्वांटिटी लिक्विड की वो उस एंजाइमेटिक प्रोब पे जो कि वो एक ग्लूकोज मीटर है या वो ग्लूकोज स्ट्रिप है उसके ऊपर डालते हैं और उसके डालने से क्या होता है कि एंजाइम तो ऑलरेडी वहां पर फिक्स हुआ होता है उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को मेजर करने के लिए। मेजरमेंट के रिस्पॉन्स में वहां पर ट्रांसड्यूसर अटैच है, ये एक सेंसिंग सिस्टम है ना, ये सेंसर है सारे के सारे, एक ट्रांसड्यूसर अटैच है जो क्या करेगा उस एंजाइमेटिक कन्वर्जन को करंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और एक आउटपुट सिग्नल देगा। So this can provide a measurement of glucose from less than 1 gram per liter of glucose to over 100 gram per liter. तो इस मेथड के थ्रू ये जो आपका सेंसिंग मैकेनिज्म है, सेंसर अटैच है, ग्लूकोज सेंसर, वो क्या करता है उसके लिए जो मेजरमेंट रेंज है वो लेस देन 1 ग्राम पर लीटर से लेकर ओवर 100 ग्राम पर लीटर तक ये एक्यूरेटली मेजर भी करता है और कंट्रोल भी करता है। Next is methanol measurement and control. In this case, a chemical sensor is used to measure the concentration of methanol. ग्लूकोज के केस में एंजाइमेटिक सेंसर था, मेथनॉल के केस में केमिकल सेंसर है जो कि मेथनॉल वेपर जो कि एग्जिट गैस स्ट्रीम से रिलीज हो रहे हैं उनको मेजर कर रहे हैं। The sensors are usually variant of the type used in breathalyzer system. ये जो चेक नहीं करते कि ड्राइविंग करते हुए अल्कोहल तो नहीं यूज कर रखी, तो वो अल्कोहल मीटर होता है उनके पास, वो उसको मुंह में देते हैं उस ड्राइवर के और उससे फिर साथ ही वो सिग्नल जो है वो बीप अगर स्टार्ट हो जाए तो उसका मतलब है जी इसने अल्कोहल इनटेक कर रखी है। बिल्कुल वैसे ही ब्रेथलाइजर्स की तरह के जो केमिकल सेंसर्स हैं वो बायोफर्मेंटर में यूज होते हैं।
The concentration of methanol in the vapor can be directly related to the concentration in the culture media. अब वेपर में जितना मेथनॉल का कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली रिलेट करता है कल्चर मीडिया के अंदर जितनी मेथनॉल बन रही है. So the probe type alternative uses a carrier gas to remove the alcohol vapor from the culture. Signal transducer and amplifier system provide the output measured value. This type of sensor is typically used to monitor growth and protein overexpression by the yeast Pichia pectoris. ठीक है, तो ये इस तरीके से बकायदा जिस तरह सेंसर्स होते हैं बायो सेंसर्स वैसे ही ये सेंसर्स हैं. ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी एम्बिग्विटी हो, यू आर वेलकम टू आस्क. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम. अल्लाह हाफिज.